हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIOS एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस जिसका कोड है 330 क्लास 12 का हम लोग TMA सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये अप्रैल एंड अक्टूबर 2023 बैच के लिए है। तो बिना किसी देरी किए हम लोग अपना सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से बी का चूज किया है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सोर्स प्रोग्राम के अंदर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन यूजिंग अ ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम a sequence of a statement in binary that is generated after compiling the source program. Source program contains English words according to the syntax of the programming language. An object program contains binaries. Source code is another name for source program. Object code is another name for object program. Source programmer can read the source program. Object program, machine can read the object program. Source program creates the source program, and in object program, compiler creates the object program. Source program is the input to the computer. Object program is the output of the compiler. तो ये आप लोग लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, फिर आप लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं इसको। फिर हम लोग का आंसर नंबर 2 हम लोगों ने चूज किया है 2 का ए, वो है डिफाइन टोकन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो इसमें एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स, इसमें आंसर है हम लोग का अ टोकन इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट लॉजिकली बिलोंग टुगेदर। ओके, the programmer can write a program by using tokens. C++ uses the following types of tokens. C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स है, पंक्चुएशंस है और ऑपरेटर्स है। तो कीवर्ड के अंदर आता है, देयर आर सम reserved word in C++ which have predefined meaning to compiler called keywords. Identifiers, symbolic names can be used in C++ for various data items used in a programmer in his or her program. Literals often referred to as constant are data with items that never change their value during the execution of the program. And the last one is operators are special symbols used for specifics. C++ includes many operators. ओके, तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में हम लोग का है क्वेश्चन 3 में हम लोगों ने बी चूज किया है, वो है लिस्ट आउट द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ स्कूल स्टैंडर्ड्स बॉडीज। तो इसका हम लोग का आंसर
है यहाँ पर अवेलेबल, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ओपन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। तो फर्स्ट आपका एप्लीकेशन इंडिपेंडेंस। तो टू इंश्योर दैट एक्सेस टू रिसोर्सेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग का आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। To ensure that access to resources is not restricted to particular hardware platform. Long-term access. To ensure that quality scholarly resources can be preserved and accessed over a long time frame. Some examples of recognized open standard bodies are, ये आप लिख नहीं सकते, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। यहाँ पर W3 इसलिए लिखा है क्योंकि W3 टाइम्स आ रहा है www, तो वर्ल्ड वाइड वेब www। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट of the web standard. Relevant standards include HTML, XML, CSS, SMIL, SVG, etc. फिर आता हम लोग का IETF, responsible for the development of internet standards known as IETF, RFCs. Relevant standards include HTTP, MIME, etc. उसके बाद हम लोग का है ISO, Internet Organization for Standardization, ISO. Relevant standards area include characters, sets, networking, etc. तो क्वेश्चन 3 भी है हम लोग का यहाँ पर फिनिश्ड हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने बी चूज किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बी है। तो बी का क्वेश्चन है लिस्ट आउट द वेज थ्रू विच क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डेवलप्ड। ओके, तो इसका आंसर है डिप्लॉयड। यस, तो इसका आंसर है, इसका भी बहुत सारे पार्ट्स में है। ऑन, इसका फर्स्ट जो है वो है ऑन डिमांड फर्स्ट सेल्फ सर्विस। एज यूजर कैन रिक्वेस्ट एंड मैनेज फॉर own computing resources as per your need. That is, the user can choose the computing capabilities such as server time, network bandwidth, storage capacity, etc. These requests are fulfilled automatically without requiring human interaction. तो उसके बाद हम लोग का है broad network access. तो इसमें you can access a given service over the internet or private network. Thus, it is required that all cloud services should always be available over then the network and access through standards mechanism that promote use by heterogeneous thin or thick client platforms. Example, mobile phones, laptops and pads. ओके, PDAS। उसके बाद हम लोग का आता है रिसोर्स पूलिंग। तो रिसोर्स पूलिंग में हम लोग का आता है पूल्ड रिसोर्सेज मीन दैट यूजर can select any resource from a pool of computing resources. Example of resources including storage, processing, memory, network bandwidth, and virtual machines. The cloud service provide need full pool of all computing resources to serve multiple users using a multi-tenant model with different physical and virtual
resources. These resources are dynamically assigned and reassigned according to user demand. The user generally has no control or knowledge over the exact location of the provided resources but may be able to specify location data higher level of absorption, that is country, state or data center. Does for the end user resource uses is independent of its location. तो उसके बाद हम लोग का आता है रैपिड इलास्टिसिटी. तो इसमें the service which are provided you can be rapidly and elastically change to the user. All these services are available and can choose any one of them. It should appear to the user that all services are unlimited and can be purchased in any quantity at any time from anywhere. Measured service. Cloud systems automatically control and optimize resource used by leveraging a metering capability according to the type of service. For example, storage, processing, bandwidth, and active user account. That is, the service provider will charge the user as per the uses of IT services. Resource uses can be monitored, controlled, and reported, providing transparency for both the service provider and user who are utilizing the service. The resource service which is provided can be scaled larger or smaller, and according to the use of service type, the type of service and amount of time which this service is used, also number of user the customer are built. Okay, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है. अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं. 5 में हम लोग का है, हम लोगों ने इसका भी बी चूज किया है. लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर. तो इसका आंसर है the types of soft skill requirement required by the entrepreneur are communication. It is a process of exchanging information among people. It needs effective language, presentation skill, environment, etc. The figure below explain how to communicate effectively. इसके बाद हम लोग का आता है interpersonal relations. It is a skill to communicate with each other. It is used not only in offices but in our day-to-day social life. People with good interpersonal skills and perceived as confident, calm and charismatic. उसके बाद आता है environmental observation. इसमें आता है हम लोग का environmental observation is one of the technical skills. This skill helps in understanding job objective and current scenario of the society with respect to the business that one wants to start. उसके बाद हम लोग का है coordination. It is a skill that helps in understanding other people and work together to achieve a set goal. Coordination must exist among the
team of members in order to achieve best possible result. तो इसके बाद है हम लोग का specific operation technology. Sometimes a specific technology is required for achieving a specific goal. For example, if you are a developer of software for web designing, then you require knowledge of some specific knowledge like HTML, CSS, Java, script, etc. तो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है. तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोगों ने बी चूज किया है. बी में हम लोग का कुछ अच्छा से करने का है. देख सकते हैं आप. एक्सप्लेन OOP, explain object and class with the suitable example. तो बिना किसी देरी के इसका भी हम लोग आंसर जानते हैं. इसका आंसर है, पहले आपको लिखना है, the object oriented programming is a different approach to programming. It has been created with a view to increase programmers' productivity by overcoming the weakness found in procedural programming approach. Over the years, many object-oriented programming languages such as C++, Java have come up and are becoming quite popular in the market. The major need for developing such languages was to manage the ever-increasing size and complexity of programs. तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है ऑब्जेक्ट इज अ क्लास वेरिएबल और एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. It can present a person, a bank account, or any item that a program can handle. When a program is executed, the object interact by sending messages to one another. For example, if customer and account are two objects in the program, then the customer object may send message to account object requesting for a bank balance. Each object contains data and code to manipulate data. इसके बाद class objects can interact without having to know detail of each other's data or code. It is sufficient to know the type of message accepted and the type of response returned by the object. उसके बाद हम लोग का आता है क्लास. क्लास में you have to write, we have just mentioned that object contains data and functional code to manipulate that data. The entire set of data and code of an object can be made a user-defined data type with the help of a class. In fact, objects are variable of type class. Once a class has been defined, it can create a number of objects associated with the class. Okay? उसके बाद आपको ये टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है क्लास नेम, देन क्लास वेरिएबल्स, उसके बाद क्लास फंक्शंस. ओके, ये करने के बाद आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लास एम्प्लॉय विच हैज सू, बिल, अल, हल, David, different employees. These are the names of the employers. Each employee will have unique identity. So they will form the object of class employee. फिर आपको ये ड्रॉ कर लेना है. एम्प्लॉय
एम्प्लॉय क्लास। उसके बाद यहाँ से एक ठो एरो ये वाला नीचे आएगा, उसके बाद एक ठो इधर बनाने का है, उसके बाद एक ठो इधर, उसके बाद एक ठो इधर, उसके बाद एक ठो यहाँ। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। इससे आपका प्रेजेंटेशन जो है टीएमए का वो अच्छा लगेगा। इधर आप लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एम्प्लॉय। यहाँ पर वो सबका नाम लिख दीजिएगा, सू, बिल, अल, हल, डेविड। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फिगर, ये वाला फिगर के बाद लिखिएगा एम्प्लॉय क्लास एग्जाम्पल। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको और टीएमए सॉल्व चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।